I'm doing. So if I am having another example here, I have to construct the binary search tree. Again, I am only interested in 1, 2, 3, 4 and 5. N plus 1 तक rows जाएंगी. I will be having rows till n plus 1 and I am having columns from 0 to n. So I am having 0, 1, 2, 3 and 4 columns. I am only interested in them. Similarly, I will be having ये cost का अगर है तो I will be having a similar for root also where I will be having 5 rows and 5 columns. So I have 1, 2, 3, 4 and 5 and 0, 1, 2, 3 and 4. Fill the diagonal elements initially here. The diagonal elements cost is 0. The root is -1. Again, fill the elements just above the main diagonal 1, 2, 3, 4. Probability of 1, 2, 3, 4, it is 0.15, 0.10, 0.05, 0.10. Start with this column. इस कॉलम में आउट ऑफ दीज टू किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो रूट रहेगा. सिंस 3 और 4 में डी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, डी विल बी द रूट, 4 इज द रूट. फॉर रूट 4 कैलकुलेट द कॉस्ट here. R cost for root 4 I am checking and R cost I am checking for 3, 4. So it comes out to be probability 3, 4 plus cost of low, root is 4 minus 1 plus cost of root plus 1, low. This comes out to be probability of 3, 0.05 plus 0.10, cost of 3, 3 which is 0.05 and cost of 5, 4 which is 0. So this comes out to be 0.2. Here it is 0.2. Exam में time नहीं लगेगा for me telling you this. Again go, this I have to calculate, 2, 3 I have to calculate. 2 और 3 में if I see 2 is having higher probability, 2 will be the root, 2 is the root. Calculate only for root 2 here. I am calculating for 2, 3 here. Low is 2, root is 2 and high is 3. Now calculate probability of 2 is 0.10, probability of 3 is 0.05, 2, 1 is 0, high low से बड़ा हो गया, 3, 3 is 0.05. So this again comes out to be 0.2. This is also 0.2. अब कैलकुलेट करना है मुझे ये. I have to calculate 2, 4. 2, 4 के लिए पॉसिबल रूट्स है 2, 3 और 4 जो कि बी सी डी. अब इसमें सी रूट नहीं है मुझे पक्का पता है, पर बी या डी में कौन सा रूट है मुझे नहीं पता है. सिंस दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, दोनों में से कोई भी रूट हो सकता है. सिंस बोथ हैव सेम प्रोबेबिलिटी, either of them can be root. As we will see, cost of calculating both will be same. Since हमें नहीं पता होगा, we will have to calculate for both. So if I'm calculating for B first, 2, 4 with root as 2 is cost 2, 1, 2, and this becomes high becomes 4. If I'm calculating cost of 2, cost probability of 3 plus probability of 4, 2, 1 becomes 0, 3, 4, this becomes 0.2. So the total probability here comes out to be 0.45. For root 2, probability is coming out to be 0.45 when I am searching from 2 to 4. Now for root 4, what is the probability? Let's check. It comes out to be probability of 2, 3, 4 plus cost of 2, 3. 2, 3. It comes out to be 0.2. 2, 3 is 0.2 and cost of 5, 4 comes out to be 0. It is again coming out to be 0.45. So दोनों के केस में कुछ भी हो सकता है. The cost is running absolutely the same. Since the अगर हम एल्गोरिथम से रन करेंगे तो since the बाद वाले की कॉस्ट बड़ी नहीं होगी तो पहले वाला रूट चूज हो चुका होगा. So B will be chosen as the root. If going by the algorithm, B will be chosen as the root. So 2 will remain the root here and the cost comes out to be 0.45. Again go ahead, check for low becomes 1, high becomes 2. 1 और 2 में A और B में A is having higher probability, A will be the root. So A will be the root.
a will be the root. कैलकुलेट जब a 1 होगा तो 1,2 में क्या हमारा रह जाएगा, कैलकुलेट विद 1 एज द रूट. What will be the cost? The cost will come out to be probability of 1 plus probability of 2 plus cost of 1 comma 0 is 0 plus cost of 2 comma 2 is 0.10. This comes out to be 0.35. It is 0.35. Now we come on to calculate 1 comma 3. अब 1 से लेके 3 में मुझे देखना है 1 या 2. I do not know कौन सा बेटर है. So I'm going to check 1 comma 3 में 1 या 2 दो ही पॉसिबल है. 3 C तो रूट हो ही नहीं सकता, ये हमें पता है. 1 या 2 we will just check. So 1 से लेके 3 में if root is 1, then what will happen? 1 से लेके 3 में हम देख रहे हैं रूट 1 के लिए और रूट 2 के लिए. रूट 3 नहीं होगा, ये हमें पक्का पता है. 1 और 3 में although we can see 1 will be the root, still we have to check for both. So if 1 is there and 1 is the root, then the probabilities that would be coming out to be 1, 0 की 0, 2, 3 की probability है 2, 3 की probability here is 0.2. So this comes out to be 0.5. So if root is 1, cost is 0.5. If root is 2, then what will happen? Let's see. If root is 2, then cost of 1, 1, 1, 1 is 0.15 and cost of 3, 3 is 0.05. So the total cost here comes out to be 1, 1 is 0.15 and 3, 3 is 0.05. So the total cost comes out to be 0.5 again. दोनों के केस में सेम आई है. तो by the algorithm 1 will be the root, 1 becomes the root here and the cost becomes 0.5. फाइनल केस में हमें चाहिए 1 या 2 में से. अगेन सिर्फ 1 या 2 के लिए चेक करना है, 4 और 5 के लिए चेक नहीं करना पड़ेगा हमें. सो फॉर रनिंग फ्रॉम 1 to 5 नाउ आई एम चेकिंग, सॉरी 1 to 4, 5 तो है ही नहीं. 1 to 4 आई विल बी चेकिंग है इफ रूट इज 1 और इफ रूट इज 2. अब 1 से लेके 4 तक के ट्री में आई एम चेकिंग फॉर रूट 1 एंड रूट 2. आई होप मेरी बात सब समझ रहे हैं. आई एम ऑडिबल ना? Yes, ma'am. Thank you so Yes, much. ma'am. Thank you so much. So if I am calculating it, I know आपको कॉपीज में लिखना पड़ रहा है, मैं इरेज करके लिख रही हूँ, तो I am being quick. I understand that. That's okay. So if I am checking for 1, 4, so it is coming out to 0.15, 0.10, 0.05 plus 0.10 probability of A, B, C, D plus cost of 1, 0 which will come out to be 0 plus cost of 2, 4. 2, 4 is coming out to be 0.45. So the total cost here will be 0.85. So for root is equal to 1, the cost is coming out to be 0.85. So if I am calculating for root is equal to 2, the changes will be r minus 1 and r plus 1. In this case, the cost of 1, 1 will be 0.15, cost of 1, 1 plus cost of 3, 4. 3, 4 will be 0.2, 0.2. 3, 4 is coming out to be 0.2, right? So the total cost here will come out to be 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75. So this is better cost if B is taken as the. Now यहाँ पे अगर आप देखो A की probability B से ज्यादा है, लेकिन B को अगर हम रूट रखेंगे तो कॉस्ट कम है. क्यों? क्योंकि बाकी जो नीचे जा रहे हैं ना, उनके लेवल्स पे जो कॉस्ट ऐड हो रही है वो बेटर है यहाँ पे. ये क्लियर हो रहा है? इसलिए हमें 1 और 2 दोनों के लिए देखना था. Yes, ma'am. So 2 is the root here and the cost is 0.75. Done. Question खत्म. टाइम लगा कोई? 10 minutes में सॉल्व हो गया. कितनी देर लगी है? It is not taking much time. Trust me. That is what I was trying to say. So when you have found, you will be constructing the tree. Initial tree जो है वो आपका A से लेके D तक है.
So you will be checking root of 1 to 4. Root of 1 to 4 is 2. That means root is B. Tree of, when B is the root, the tree is divided into two halves. एक half तो A ही होगा obviously. Next is C or D. तो C और D में से root कौन सा we have to check. So we have to check the value of 3, 4. इसकी value check करने 3, 4 का root है 4. So root comes out to be 4. That means E is the root and C is the child. So this is my optimal binary search tree for the given question. Is it clear to all?